ओके गुड मॉर्निंग ऑल हमें स्टार्ट करिबा Fe3SO12 रो बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कोन केमति होची देन देखिबा फैक्टर्स अफेक्टिंग योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन स्टार्ट करिबा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रा बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस कर दबा आ गोटे तमन रिक्वेस्ट तम माने सेंड कर देबी बट तुम आज लिखिब जदि आज तुम मैंने लिखि पार मिनिमम तार 50% लिखि सारी पार देन मुझे क्लास पुणी नेबी मास और तुम मैंने गोटे दिन गैप कह गोटे दिन गैप दबा तापर मास स्टार्ट कर तो तुम मैंने लिखि पार आज मुझे पठेदेवी क्लास वाला पठेदेवी मास जो मटेरियल्स तुम मैंने लिखि पार मत कहले से अनुसार काली क्लास नेबी फर्स्ट रिप्लाई तुम मुझे एक्सपेक्ट कर कौन तुम कर लिखिपार कि ना मिनिमम 50% 40% लिख दिन में 40% लिखिपार कि ना मत तुम रिप्लाई दरकार फास्ट मास स्पेक्ट्रा जो मटेरियल पठा 40% कम से कम तार बेसिक प्रिंसिपल थ्योरी भी पठेदेवी आज ठीक है तार बेसिक प्रिंसिपल थ्योरी इंस्ट्रूमेंटेशन एतिक लिखिदेले हम काली गोटे क्लास नहीं जीवा देन नेक्स्ट क्लास पई काली लिखियो कोन एमति कंटिन्यू कर सकता ठीक अछि तो समस्त लिखि देबो ताले मु क्लास सरला परे पठे देबे मटेरियल मनमत ग्रुप रे तुम शेयर कर दो तो माने लिखि देले काली हम भी स्टार्ट पढिबा अपनी मास आज भी मास स्टार्ट करिबा काली मेजर मास पढाओ ठीक अछि हमें बॉन्डिंग देखिबा उतन पे Fe3SO12 रो बॉन्डिंग देखिबा तो Fe3SO12 बॉन्डिंग हला आगो फर्स्ट प्रिपरेशन देखिबा समस्त प्रिपरेशन देखिबो एंड केमिकल रिएक्शन पार्ट जोटा मु कहि से बुक टा एक्चुअली मो पार नाही बर्तन पई आ भुवनेश्वर अछि मु तो जाई परनी मु गां रे अछि तो जिते जीवी तुम परीक्षा जुलाई तो जून मास होपफुली भुवनेश्वर गले तुमको लिखिक पठे देबी केमिकल रिएक्शन निश्चित परीक्षा पड़िबो हम स्टार्ट करियो अपन Fe3SO12 रो Fe3SO12 रो बॉन्डिंग देखिबा ओके नेट टिके स्लो हो जाउची सेते बेटी क्लास कंट्रोल लेट हो गेला तो स्टार्ट करिया बॉन्डिंग प्रिपरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन से विषय हम मुख्यतः पढ़िबा Fe3SO12 रो तो Fe3SO12 रो फर्स्ट प्रिपरेशन हमें पढ़िबा तो कोन करा होची Fe2CO9 निया होची Fe2CO9 को UV रेडिएशन देले से Fe3SO12 along with FeCO5 plus carbonyl प्रोड्यूस करूची Fe3CO9 Fe2CO9 को जदि मु दोची UV रेडिएशन तो UV रेडिएट करूची ताले मते Fe3CO12 ता सहित FeCO5 प्लस कार्बोनिल बडुची तो बैलेंस करियो बैलेंस कले यू विल बैलेंस कर 2 Fe2CO9 हे होची आ ताको UV रेडिएशन देई के हम पाउछंती Fe3CO12 प्लस FeCO5 प्लस CO तो बिफोर हाइब्रिडेशन जीवा पूर्व फास्ट आगे आसीबा एक्चुअली स्ट्रक्चर में फास्ट पाऊ हाइब्रिडेशन बारंबार तुम कहि हाइब्रिडेशन इज एन इमेजिनरी कांसेप्ट हाइब्रिडेशन इज एन इमेजिनरी कांसेप्ट तो कि देखिना दे एमटी एसपी मिसी के एसपी होची बट इट इज ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से जो कांसेप्ट ता हमर जो जहां भी हमर अछि स्ट्रक्चर जा पाउ स्ट्रक्चर को प्रॉपर एक्सप्लेन करि पाउची से हाइब्रिडेशन जे कोनस गुडी कंपाउंड रो मिथेन नाम पाइले सीएच को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाउचंती आ सब बॉन्ड लेंथ सेम पाउचंती सो हमें कहउछन जे sp3 हाइब्रिडेशन हे जाउची ताहाले सब ऑर्बिटल कार्बन में समान हे गेला जेहेतु कार्बन सब ऑर्बिटल सेम टाइप रे माने गोटे प्रकार रे हेले सेति पई बॉन्ड गुडा सेम बॉन्ड लेंथ रे भी समान रहउची यस या गले सरोज हाइब्रिडेशन कांसेप्ट इज ए हाइपोथेटिकल कांसेप्ट और इमेजिनरी कांसेप्ट बट इमेजिनरी बा हाइपोथेटिकल हेले भी ये प्रॉपर एक्सप्लेन करछि जहां भी हमर जोटा हमें कंक्लूजन पाउचंती से कंक्लूजन को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की कर पाउछि हाइब्रिडेशन कर पाउछि सो इट इज ए कांसेप्ट ऑल्दो इमेजिनरी कांसेप्ट बट हैविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन प्रॉपर्ली जब कर पाउछि सो इट इज करेक्ट
प्रॉपर एक्सप्लेन करना पारना देन तार आशंका प्रोडक्शन संदा बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करि पारुची पर्टिकुलरली जो बॉन्ड लेंथ गोटे मॉलिक्यूल सब बॉन्ड लेंथ समान केमिति होची सेटा केही एक्सप्लेन करि परन जदि हाइब्रिडेशन कांसेप्ट न रहिबो we are unable to explain how all the bonds in a compound are same with all same type atom गोटे same type atom सहित गोटे मेटल हो बा गोटे सेंट्रल एटम हो तार कोन होची बॉन्ड लेंथ समान होची सेम बॉन्ड लेंथ सेटा हम एक्सप्लेन करछन इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से एक्सियल इक्विटोरियल भेले जहां भी तुम सब इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करी होची सो ऑल्दो इट इज एन इमेजिनरी कांसेप्ट स्टिल इट इज करेक्ट सो मैं स्टार्ट करबा Fe3CO12 तो सेटा फर्स्ट स्ट्रक्चर आसे एक्चुअली हमें स्ट्रक्चर लास्ट टू करछन ताना मैं बुझे लास्ट स्ट्रक्चर करछन हम स्ट्रक्चर फास्ट टू कर देले भी तुम पाए बेटर प्रॉब्लम किछि नाही काई ना स्ट्रक्चर फास्ट टू पाउछ एक्सआरटी एनालिसिस एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड रे हमें स्ट्रक्चर पाइ जाय एक्स रे डिफ्रैक्शन हो काम आईआर स्ट्रेचिंग निया जाय तार आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें देखछंती तो माने भी ऑलरेडी पढी छ एगुडा सब कार्बोनिल टर्मिनल कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अलगा ब्रिजिंग कार्बोनिल अलगा ये जहां भी सब पढी छ माने ये जो स्पेक्ट्रा आईआर स्पेक्ट्रा हो एक्सआरटी हो सब स्पेक्ट्रा को यूज करबा सब एनालिटिकल मेथड को हम यूज करके हम स्ट्रक्चर फास्ट डिटरमाइन कर दियंती स्ट्रक्चर डिटरमाइन कला परे हमर आईडिया आ जाय थाए का कोटा तर को एफी की ब्रिजिंग सीओ का को एफी की ब्रिजिंग सीओ लागि छी को एफी फ्री अछि तो आईडिया आ जाय थाए वी हैव एन आईडिया हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमें डिटरमाइन कर सकते थांती बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड देन कोन आसे स्ट्रक्चर ऑलरेडी माने डिटरमाइन हैला परे देन कांसेप्ट आसुची तापर नेक्स्ट कांसेप्ट तमर जोटा होची सेटा हाउस तमर कोन हाउ टू एक्सप्लेन ये जो स्ट्रक्चरटा धरो ए सीओटा जदी हम बुझते गोटे दीटा एफी ब्रिजिंग अछि गोटे एफी ब्रिजिंग होनी तो से जो कथाटा केमिति हम एक्सप्लेन करबा से एक्सप्लेनेशन होची और हाइब्रिडेशन कांसेप्ट हाइब्रिडेशन आसी जी माने को हाइब्रिडेशन दा को ऑर्बिटलटा मेटल मेटल बॉन्ड करूची कोटा ब्रिजिंग कार्बन से बॉन्ड करूची जहां भी सब एक्सप्लेन करबा हम स्ट्रक्चर पाइसला पर आगे हम एक्सप्लेन करबाने हमें कोन सर मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर न जाने कि हम हाइब्रिडेशन कर परबे नै हमें ता स्ट्रक्चर जानि जन जो मॉलिक्यूल देखो स्ट्रक्चर में जानि जन तापर हमें से अनुसार हाइब्रिडेशन कर दोछन तापर हमें अप्लाई कर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ठीक अछि एमती हाइब्रिडेशन हो बट अप्लाई करि पारुछन स्ट्रक्चर एक्चुअली फास्ट एनालिसिस जो पर्टिकुलरली मेटल कॉम्प्लेक्स रे स्ट्रक्चर एनालिसिस करा जाय बाय यूजिंग एक्सआरटी मेथड एंड आईआर स्पेक्ट्रा तो हेल्प करे को ग्रुप अछि सो फर्स्ट हमें जे देखिबा Fe3CO12 Fe3 से मॉडल करथले जे करि पानी मॉडल करथले भलो तुम इजे न बुझिया बे ठीक अछि सो राइट सो Fe3CO12 दैट मींस हमर दीटा Fe एटम अछि आ गोटे कोन होछि गोटे हमर होछि तीनटा Fe एटम अछि Fe3CO12 सॉरी Fe3CO12 स्टार्ट करिया जोटी कि तीनटा Fe हमर अछि नै तीनटा Fe हमर अछि ए ट्रायंगल दे कर देली तीनटा Fe ओके सो तीनटा में दीटा हम गोटे कलर करछि आ गोटे अलग कलर करछि नै तो एक्सआरटी एनालिसिस हम जानि छ ऑलरेडी फ्रॉम एक्सआरटी एनालिसिस हम जानि छथि आउट ऑफ 3 Fe atoms 2 are involved dita Fe involved होइछन कोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल दीटा Fe से तो बॉन्ड करिछि आ गोटे Fe से तो कोनोसी ब्रिजिंग कार्बोनिल अटैच हेइ नांती आउ थरे हम डिस्कस कर दोछि in Fe3CO12 there is 3 Fe atoms तीनटा Fe atom छथि तीनटा Fe atom भीतर गोटे होछि तमरो अनब्रिज्ड बा जहां अनब्रिज्ड मींस ता कोनोसी ब्रिजिंग सीओ लागि नांती आउ दीटा को कोन पूरा इधर ब्लू दीटा इधर जो Fe atom छथि ताको गोटे कोन अछि ताको ब्रिजिंग कार्बोनिल अटैच अछि ये गोटे आयरन जाको ब्रिजिंग कार्बोनिल अटैच नाही सो Fe3CO12 कमाने जानि गलो Fe3CO12 हमें एक्सआरटी एनालिसिस पाइले एक्सआरटी दीटा आंसर पाइबो गोटे पाइबो स्ट्रक्चर ता कोन पाइ जइथिबो आ गोटे पाइबो टाइप्स ऑफ कार्बोनिल केते प्रकार कार्बोनिल अछन हमें देखिबा जे एठी टू टाइप्स ऑफ कार्बोनिल अछंती किछि कार्बोनिल गोटे सेम टाइप रो स्ट्रक्चर दोछंती दोज आर अनब्रिज्ड जो कार्बोनिल माने ब्रिजिंग कार्बोनिल नहंती से माने गोटे टाइप रो देबे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आ जो माने ब्रिजिंग थिबे से माने आ गोटे टाइप रो देबे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सो एठी हम जानिले फर्स्ट जानिले जे एठी
तीनटा मेटाल अच्छी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन आम स्ट्रक्चर जाई परबा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सआरडी एनालिसिस देन फ्रॉम आईआर एनालिसिस तुम कहि परिबो एडी जो कार्बोनिल अच्छी टू टाइप्स रो कार्बोनिल अच्छी one is your terminal carbonyls or the carbonyls which are unbreached other one is breached carbonyls माने ब्रिजिंग करछन बा जहा को मेटल सहित जे ब्रिज भाबे काम दुईटा मेटल अटैच हो जाय ब्रिज दी पटे नयर दी पट को गोटे ब्रिज हम जॉइन करूची सेमती गोटे कार्बोनिल अछि दुईटा एथिन जॉइन करूची ओके सो केतरा कार्बोनिल देखिबा केतरा कार्बोनिल डिपेंड करछ केतेटा कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी माने आज ब्रांड कोन आज ब्रिजिंग कार्बोनिल बने आसुची जो 1700 1850 ए रेंज रे कार आसुची तो 1850 रेंज रे आसला त हमें कहबा एटे ब्रिजिंग हेची तो जेतेटा कार्बोनिल आसीबो सेतेटा ब्रिजिंग हेची से भडिया टर्मिनल अल्किन में जनरल टर्मिनल जो कार्बोनिल अछि हमें जानचंती माने प्योरली जोटा कार्बोनिल पूरा सीओ मेटल जमा लागि नथिबो तार आसुची के तार 2143 आसे 2143 हला 2143 सीएम इनवर्स आ जते बेले चिकोन गोटे मेटल को लागिला माने बैक बॉन्डिंग हबो एंड इफ देयर इज बैक बॉन्डिंग बारंबार कहिछि बैक बॉन्डिंग कोठी हबो सेदिन हम काली भी हम डिस्कस करथले जे पाई स्टार ऑर्बिटल कार्बोनिल पाई स्टार ऑर्बिटल रे बैक बॉन्डिंग हबो सेति फाई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कमी जिवो तो मेटल सो अटैच हला माने गोटे कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कमी जाय तो ब्रिजिंग माने कोन ब्रिजिंग हले दुईटा मेटल लागि तीनटा मेटल ब्रिजिंग भी अछि जते अधिक मेटल लागिवो सेते कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कमिबो बिकॉज़ तार बैक बॉन्डिंग बढ़ी और जते पाई स्टार इलेक्ट्रॉन बढ़िबो जते पाई स्टार इलेक्ट्रॉन बढ़िबो सेते कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो सेते कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो जते बॉन्ड वीक हो सेते स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कमिबो एटा सोरस तो मन रखिया पड़िबो आईआर जो कथा कहउछ आईआर पर्टिकुलर गोटे ग्रुप रो तो मन रखिया पड़िबो सेटा किछि मन नथाय कारण एक्सपेरिमेंट्स आन बाहर करछन्ती फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड फ्रॉम आईआर स्पेक्ट्रल एनालिसिस तुम मन पर्टिकुलरली मन रखिया पड़िबो तुम जोटा एक्सप्लेन करिवो तुम से वैल्यू रो एक्सप्लेन करिवो परीक्षा क्वेश्चन पड़िछि तो तुम मन रखिया पड़िबो चैनल देखो सिंगल ब्रिजिंग थिबो से 2000 माने गोटे मेटल लागिले सपोज गोटे कार्बोनिल केवल गोटे मेटल को लागिछि दैट मींस इट इज अ टर्मिनल कार्बोनिल तो ये 2000 पाखा 1990 1980 2000 पाखा पाखी रखियो 2040 एनआईसी ऊपर आसे तो जिते बेले नै जीव कोटा तोर ब्रिजिंग अछि जदी दीटा मेटल ब्रिजिंग अछि ताले से 1850 पाखा भी रखियो जदी तीनटा मेटल अछि 1750 60 एम रखियो पळेला 1650 60 रेंज रखियो गोटे पर्टिकुलरली मन के जदी जते ब्रिजिंग मेटल बढ़िबो सेते कमे कमे चलिबो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जिते मेटल अटैच कार्बोनिल रो नंबर ऑफ मेटल अटैचमेंट बढ़िबो सेते स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कमी आसीबो ओके सो Fe3 यो देखछन्ती हम स्ट्रक्चर हम देखछन्ती देयर इज कोन one Fe which is unbreached बा which is जो Fe की there is no carbonyl there is no bridging carbonyl attached हला एमिति गोटे Fe अछि जहा को की bridging carbonyl attach हेनी आउ दीटा Fe की bridging carbonyl attach हेछि एंड हम कोड जानले एक्सआरडी एनालिसिस अब के काहे की दीटा क्वेश्चन सर काहे की दीटा कार्बोनिल ब्रिजिंग अछि हम पाइलेटा कोड पाइथिबा आयर पाइथिबा हम जो आयर एनालिसिस स्पेक्ट्रा करथिबा आयर स्पेक्ट्रा हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकथिबा आयर स्पेक्ट्रा रे जे थोड़ा Fe3CO12 अछि Fe3CO12 10 कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गोटे आसुची आउ दीटा कार्बोनिल आउ गोटे टाइप रो आसुची जो 10 टा कार्बोनिल गोटे आसिला बा 2000 सेंटीमीटर पाखा भी आसिला हमें कहबा जेहेतु 10 टांगर stretching frequency ये 10 टा कार्बोनिल stretching frequency as the stretching frequency of this 10 carbonyl groups comes around kete 2000 centimeter inverse hence they are terminal carbonyls ଆଉ जो मान कमे जीवो two carbonyl stretching frequency are found near 1850 1850 सेंटीमीटर पाखा पाखी आउ दीटा कार्बोनिल जे मिलिला तो से निश्चित ब्रिजिंग हेति ब्रिजिंग नले एते कमिबो नाही तो तुम से पाई पारथिबो जे दीटा ठी हमर छथि कोन आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम पाइबा ये दीटा हमर छथि कोन ब्रिजिंग कार्बोनिल आ 10 टा छथि टर्मिनल कार्बोनिल्स और अनब्रेस्ड कार्बोनिल ब्रिजिंग भाबे काम करू नांती सो नाउ हम जे जिबा हाइब्रिडेशन हम जिबा मुख करबा नेक्स्ट पार्ट को हाइब्रिडेशन तो जे टू टाइप्स देखो लिगा एटी कार्बोनिल टू टाइप्स तो पाइले
एठी मेटाल भी देखिबो टू टाइप्स मेटाल हम पाउछंती गुटे गुटे टाइप रे एफी कोन माने ब्रिजिंग कार्बोनिल ब्रिजिंग अछि दीटा एफी जो अछंती तुमर ब्लू पेन दीटा जो अछि धरछि ता एक जो एफी दीटा कोन कार्बोनिल ब्रिजिंग करिछि ये गोटे आ गोटे एफी जहाँ कार्बोनिल ब्रिजिंग करिनी एंड होछि कौन सी ब्रिजिंग ग्रुप को लागिनी आपको लागिछि ब्रिजिंग ग्रुप ओके so two types metal are there first I'm discuss करिबा the hybridization of unbridged एफी atom जो एफीटा unbridged तार hybridization हमें एक्सप्लेन करिबा and we know आगे फास्ट hybridization करिबा माने फास्ट कोड जिवो फास्ट ऑलवेज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ तमन जानिछो एफी रो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कोन आर्गन 18 हबो 4:3d6 ओके एंड एठी कार्बोनिल अछि कोन लिगैंड ताबी तो माने सो जानिछो जे कार्बोनिल इज ए न्यूट्रल लिगैंड सो दे एफी रो चार्ज किछि नै it is a neutral ligand but it is a neutral ligand that is true but it is the strongest ligand in among all the ligands जत्तिकी ligand अछंती तांको भितरो strongest ligand के गेला कार्बोनिल so यार pairing करे कैपेसिटी सबटो अधिक it is the strongest ligand in the entire spectrochemical series the spectrochemical series रो सबटो strongest okay technical error देखिला okay again जेतु कार्बन द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड इन द एंटायर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो तार पावर अछि कोन पेयर अप करिया पे सो बतन से कोन कला पेयर अप कला जो 4s जो इलेक्ट्रॉन रहिबो करा हमरो कोन होची इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 योर 4s2 and 3d6 सो हमें 3d रखले 3d6 4s2 तापर आसो 4p तो बतन भाई 4s जो इलेक्ट्रॉन रहबो दीटा इलेक्ट्रॉन ताकु से आनी की पेयर अप कोड कला 3d रे आनी की पेयर अप कला पर देखिबो हमें बर्तन पे 6टा इलेक्ट्रॉन थिला ये ना 8टा इलेक्ट्रॉन हेला कोठी 8टा इलेक्ट्रॉन हेला इन 8टा इलेक्ट्रॉन हेला इन योर 3d सबस्टेंस 8टा इलेक्ट्रॉन हेला कने 6टा तर थिला 3d6 थिला दीटा s रो आसला 8 हेला 8 रे पहुंची तो हमें जो हाइब्रिडेशन करछंती तीनटा ऑर्बिटल कोन हला तीनटा ऑर्बिटल सब कंप्लीट फील्ड हेला पूरा पेयर हेला तीनटा ऑर्बिटल आउ दीटा ऑर्बिटल गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन रहला क्वेश्चन आंसर करिवो काहे कि सर एटा पेयर अप हेलानी ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड पेयर अप हेलानी फर्स्ट कथा कार्बोनिल स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड तो कार्बोनिल सबल प्रेफर करे कोन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पर d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स करे प्रेफर करे अब हमें ऑक्टाहेड्रल प्रायर जो बॉन्डिंग है देखियो 6 कोऑर्डिनेटेड मींस स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल टाइप तो 6 कोऑर्डिनेट हला माने हमें d2sp3 के sp3 कर परिबे जदि पेयर अप कर देबी तो d2sp3 ही परिबनी आ कार्बोनिल जेतो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड सबले गोटे ओ स्पिन कॉम्प्लेक्स प्रेफर करूची तो एटी सेति पई आउ जो दीटा रहइबो अनपेयर्ड हे कि कोटा p ऑर्बिटल से जंती अनपेयर्ड हे रहइबो आ पेयर अप करिवोनी एंड वी नीड d2sp3 sp3 d2 as we know carbon is the strongest ligand in the entire spectrochemical series so it always prefer to form a inner orbital complex so hybridization कोन हला d2sp3 हे गला hybridization तो d2 जो sp3 hybridization हला out of 6 6टा कोन d2sp3 माने कोन d टा d गोटे s 3टा p 6टा हला hybrid orbitals so out of 6 d2sp3 hybrid orbitals 2 are half filled and 4 are vacant हला तो 6टा हला d2sp3 hybrid orbital आदर दीटा होची हाफ फील्ड आ चारटा होची वैकेंट ऑर्बिटल तो बर्तन पे देखिबा स्ट्रक्चर तुम कोन करे स्ट्रक्चर देखो तुम खाता तुम देखु स्ट्रक्चर देखो तुम आ खाता रे हाइब्रिडेशन देखोनी हाइब्रिडेशन को पार्ट सुनो स्ट्रक्चर देखो तुम स्ट्रक्चर बेस इंपोर्टेंट ताला हम बुझा देखो जोटा में तुम fe1 दे देखो जोटा स्ट्रक्चर fe1 दिया है जोटा अनब्रिज जा को ब्रिजिंग कार्बन लागिनी सेही एफीटा बर्तन पे d2sp3 हाइब्रिडाइज हे गला तो देखा जेमती से कार्बोनिल कोन अछि d2sp3 जो हाइब्रिडाइज हैला हमो 6टा हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलिला 6टा हाइब्रिड ऑर्बिटल लु दीटा तमरो हाफ फील्ड चारटा होछि कोन चारटा होछि ए तमरो वैकेंट जो चारटा वैकेंट ऑर्बिटल अछि से चारटा कोन करू से चारटा
सिग्मा बॉन्ड करबा विथ कार्बोनिल एंड आमे जानि जते लिगैंड रो प्रॉपर्टी it will donate a pair of electron to metal so जो vacant orbital अछि त कार्बोनिल को दीदरा इलेक्ट्रॉन दे फिल अप कर दो नहीं कार्बोनिल दीदरा इलेक्ट्रॉन दे फिल अप कर दो देन आउ जो दीटा रहिला हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से कौन करिवो से जो अलगा जो एफी हमर अछंती आउ जो दीटा एफी बा जो एफी रे ब्रिजिंग हेची से एफी सहित मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो तो बुझी पालो D2sp3 हैला D2sp3 चारटा तो वैकेंट अच्छी से कार्बोनिल सहित ओवरलैप करके कार्बोनिल चारटा अच्छी वैकेंट ऑर्बिटल कार्बोनिल दास ओवरलैप कला कार्बोनिल द इलेक्ट्रॉन देला लिगैंड रो प्रॉपर्टी हैला इट विल डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम सो डोनेट कला करके फिल अप कर देला आउ दीटा रहला कोन आउ दीटा हमर रहला जोटा फील्ड हाफ फील्ड दीटा रहला हाफ फील्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेटा मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन कला आउ जो दीटा एफी एटम सहित ओके देन हमें जिबा ब्रिस्ट एटा तो बुझी गले हमें अनब्रिस्ट कथा बर्तमान जिबा ब्रिस्ट ओके ब्रिस्ट कथा बुझबा बैक बॉन्डिंग कथा कहनी एबे जहां भी हमें डिस्कस करछन ओनली सिंपल सिग्मा बॉन्डिंग कथा बैक बॉन्डिंग हम लास्ट डिस्कशन करबा देन अनब्रिज्ड और ब्रिज्ड एफी एटम तो ब्रिज एफी एटम देखिबो जदि सेमथि ता स्ट्रक्चर ता हाइब्रिडेशन फास्ट करबा तो तार स्ट्रक्चर ता हाइब्रिडेशन कोन करबा आगे फास्ट देखिबा आगे से बढिया कर दियो सिंपल 3d6 4s2 4p0 और हमें जानछन एफी रो जा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 देन 4s argon 18 4s2 3d6 and 4p0 so again pair up करिबा एठी pair up डिफरेंट होछि एरा टिके डिफरेंट देखो जोटी हमर थिला इन केस ऑफ योर अनब्रिज्ड एफी एटम सेठी हम जो करूथले से दीटा जाको एस इलेक्ट्रॉन जाकी पेयर अप होतला कोटे टी रे बट ए केस रे जोटा अछि हमर ब्रिजिंग एफी एटम सेठी गुठी इलेक्ट्रॉन हो जायकी पेयर अप हो कोटे डी ऑर्बिटल ले तो टोटल हम जो पाई पेयरिंग हैला पर हमें पाइबा हम D2sp3 हाइब्रिड नबा ओके बुझ आउथरे कहूची जो 3d6 4s 4p थिला जो केस हमें नहीं दिले पूर्व केस जोटा कि अनब्रिज्ड थिला बा जहा को ब्रिजिंग कार्बन लागि नथिला सेही एफी एटम केस रे एस रो दीटा जाको इलेक्ट्रॉन जाकी पेयर अप होतला कोठी एस रो दीटा जाको इलेक्ट्रॉन पेयर अप होतला जाकी डी रे बट ए केस रे केवल गुटी इलेक्ट्रॉन एस रे जीवो तो एस रे 6टा थिला 3d रे एस रे उठेला 7टा हला 7टा हला हमर कोन होची दीटा केवल पेयर अप हला आउ के पेयर अप होनांती हमें नेले कोन D2sp3 हाइब्रिडेशन कले पर D2sp3 हाइब्रिडेशन कला पर हम कोन पाइले D2sp3 हाइब्रिडेशन कला परे हमें पाइले 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो 6टा D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाइले सेथुर तीनटा होची कोन तीनटा होची हाफ फील्ड आउ तीनटा होची वैकेंट ओके तीनटा हाफ फील्ड तीनटा वैकेंट एंड आउ गुटी रोची ऑन हाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल ओके भलो से लक्ष्य करता गुटे रोची ऑन हाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल आउ कोन हैला आउ गोट देखिले तीनटा होची हाफ फील्ड जो 6टा हाइब्रिड ऑर्बिटल अछि तीनटा होची हाफ फील्ड आउ तीनटा होची वैकेंट तो फास्ट थिंग क्लियर हे जाओ जो तीनटा वैकेंट हला जो तीनटा तमर वैकेंट अछि पूरा वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हला जो तीनटा अछि वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अछि से कोन करिवो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटलटा सेटा तास बंकी करिवो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल Fe ए जो Fe रहला वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल केतरा अछि हाइब्रिड ऑर्बिटल तीनटा अछि स्ट्रक्चर देखो एबे वैकेंट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल तीनटा अछि देखो दीटा Fe के तीनटा टर्मिनल से भी लागि जो दीटा Fe हमरो जो ब्रिजिंग Fe जो तीन अछि बा जो आयरन को ब्रिजिंग कार्बन लागि छि से मानो तीनटा कार्बोनिल लागि टर्मिनल कार्बोनिल माने से वैकेंट ऑर्बिटल से तो सिग्मा बॉन्ड करबे और से वैकेंट ऑर्बिटल को ए माने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देबे तो क्लियर आउ केते रहला आउ तीनटा रहला हाइब्रिड ऑर्बिटल ओके जोटा कि हाफ फील्ड फास्ट तीनटा देखो 6टा हाइब्रिड ऑर्बिटल थिला कोडा रो जोटा हम करछन ब्रिजिंग Fe तार 6टा हाइब्रिड ऑर्बिटल थिला 6टा रो तीनटा वैकेंट तीनटा हाफ फील्ड जो तीनटा वैकेंट थिला से को गला से टर्मिनल CO बॉन्डिंग कला
टर्मिनल सीओ बॉन्डिंग कला परे हम कोन हला टर्मिनल सीओ बॉन्डिंग कला परे fill up ହେଇଯିବ କାରଣ କାର୍ବନ ନେଚର କଣ it will donate a pair of ligand it is a ligand it is a ligand ମାନେ ଦିଟା pair ନବ ଯୋଉ ରହିଲା ତିନିଟା ହାଫ ଫିଲ୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ ଅର୍ବିଟାଲ ତା ଧରୁ ଦିଟା यूज हबो टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ ब्रिजिंग कार्बोनिल सहित सिग्मा बॉन्ड करिया पई यूज हो कोटा तीनटा हाइब्रिड ऑर्बिटल तीनटा सिंगली ऑक्युपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल अछि बा तीनटा हाफ फील्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल अछि सेथरु दीटा यूज हबो टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ कार्बोनिल बा सिग्मा बॉन्ड विथ ब्रिजिंग सी सिग्मा बॉन्ड दिबो माने एफ रे करो से दीटा एफ अछंती कारण सीओ ब्रिजिंग होची आशा करू ता आशा करू दीटा एफ से करूची तो दीटा एफ रो दीटा ऑर्बिटल तार दीटा या दीटा माने चारटा ऑर्बिटल टोटल हेले पर 2 नंबर एफ रो दीटा सिंगली ऑक्युपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 नंबर एफ रो भी दीटा सिंगली ऑक्युपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हेबे सिग्मा बॉन्ड करिया पाई विथ का सहित विथ ब्रिजिंग कार्बोनिल सहित तो बर्तमान पे देखो पांचटा ऑर्बिटल पड़ेला आ गुटे कौन रही आउ गोटे रही जाइए सिंगली ऑक्युपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल आम भी देखा कोठी इन केस ऑफ मन पका कोटा करथले इन केस ऑफ योर अनब्रिज्ड एफी जो एफीटा अनब्रिज्ड हेतला तार भी देखो दीटा रही जाइतला कोन तार दीटा हाइब्रिड ऑर्बिटल थिला जो माने सिंगली ऑक्युपाइड ताहले तार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल दीटा रही जाइछि से कौन करिवो तार गोटे हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्युपाई ओवरलैप करिवो एफी 2 नंबर एफी रो जे हम 1 2 3 नंबरिंग कर स्ट्रक्चर देखो 2 नंबर एफी रो अब गोटे जो बढ़ी जाइछि हाइब्रिड ऑर्बिटल सहित टू फॉर्म मेटल मेटल बॉन्ड आउ गोटे जो तार दीटा अछि जो ऑन जो हमर गोटा रही जाइछि अनब्रिज्ड एफी तार दीटा एमिति हाइब्रिड ऑर्बिटल अछि जो माने सिंगल ऑक्युपाइड तो दीटा सिंगली ऑक्युपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल भितरु गोटे ओवरलैप करिवो सिंगली ऑक्युपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड एफी आउ गोटे ओवरलैप करिवो सिंगली ऑक्युपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ थर्ड एफी तो ओवरलैप करी कोन दबो एफी बॉन्ड मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो एते की बुझिलो एंड फाइनली देखो बर्तमान में आमे जो ब्रिजिंग एफी कहले सेठी कोन रही जाउची सेठी गोटे एमिति गोटे ऑर्बिटल अछि डी ऑर्बिटल जोटा कि हाइब्रिडेशन हेइनी बट हाफ फिल हेइछि भलो देखो तुम सब देखो गोटे एमिति ऑर्बिटल अछि इन केस ऑफ योर देखो गोटे एमिति भलो देखो गोटे एमिति ऑर्बिटल अछि इन केस ऑफ योर ब्रिज्ड एफी गोटे डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हेइनी अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल अछि जोटा कि हाफ फिल तो से अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फिल डी ऑर्बिटल ऑफ second Fe atom will overlap with unhybridized half-filled orbital of third Fe atom to form metal-metal bond. तो तीनटा metal atom हला गोटे होची hybrid half-filled d orbital of half-filled orbital of कार unbridged Fe atom ता सते कोठा हला ता सते गोटे Fe second of गोटे hybrid orbital overlap कला गोटे मेटल ऑर्बिटल बन तयार होला सेमते फर्स्ट एफी रो हाइब्रिड हाफ फील्ड ऑर्बिटल सहित थर्ड एफी रो गोटे हाइब्रिड हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल ओवरलैप करके आ गोटे कला मेटल मेटल बॉन्ड ताले कितरा हला दीटा हला मेटल मेटल बॉन्ड देन थर्ड बॉन्ड को थर्ड मेटल बॉन्ड केमते आसला तो 2 और 3 के जो बॉन्ड आइची सेटा से जो बॉन्ड आइची फ्रॉम unhybridized d orbital of second Fe with unhybridized d orbital of third Fe. Okay, unhybridized d orbital of second Fe atom and unhybridized half-filled d orbital of third Fe atom. मिसिकी ते टोटल ला के तीनटा मेटल बॉन्ड दीटा हेतला कोटा दीटा हेतला from due to overlap of hybrid half-filled orbitals आउ जो गोटे हला second और third भितर सेटा होची from unhybridized d orbital of second Fe atom with unhybridized half-filled d orbital of third Fe atom. तो इत्ते की को माने बुझ न पार न पचार यार बॉन्डिंग एति का पावर पार्ट अछि तबे बैकबोन पार्ट बुझबे
एनीवन कार डाउट अच्छी पूछो चलो कार डाउट रहा पचार Fe3CO12 बॉन्डिंग कहार कौन डाउट रहा पचार नेक्स्ट आउ गोटे पार्ट तार अच्छी बुझा को एनीवन एनी डाउट कार रहा क्लियर समस्ते ठीक अच्छे नेक्स्ट आम डिस्कस करवा तार बैक बॉन्डिंग तो तार बैक बॉन्डिंग पढ़िया आगु मोर क्वेश्चन तुम मान और का टोटल दीटा एमएम बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ नहीं नहीं और का तीनटा हला ना मेटामेट बॉन्ड आ देखो तीनटा एफई अछि हला एफई 1 2 3 नहीं मो 1 2 स्ट्रक्चर देखो तमे ये देखो नहीं हाइब्रिडेशन देखो नहीं आगे स्ट्रक्चर देखो कौन अछि तीनटा एफई आटम अछि कि नहीं भलस देखो स्ट्रक्चर रे तीनटा एफई आटम अछि तीनटा देखो आमे जोटा फास्ट हाइब्रिडेशन करले कोटा जोटा जो एफी की टोटल ब्रिजिंग कार्बोनेल लागिनी सेटा को आमे नउछंती कोन ताको आमे नउछंती Fe1 बोल देछि आउ जो देटा को ब्रिजिंग कार्बन लागिछि ताको देली Fe2 आउ Fe3 हैला 1 2 3 नंबरिंग कर दे सुविधा हो नंबरिंग कर देछि हैला आ किछि करले नंबरिंग कर सुविधा हो नंबरिंग कर करछि तो देखो आमे जोटा थिला हमर अनब्रिज्ड ओके जोटा हमर अछि अनब्रिज्ड जोटा अछि अनब्रिज्ड एफई अछि सेटा कोन D2sp3 हाइब्रिडेशन हैला D2sp3 हाइब्रिडेशन हैला पर देखो हम जो 6 टा पाइले D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेथुरु 4 टा होछि वेकेंट 2 टा होछि हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओके 3 टा हाफ फिल्ड आउ 4 टा होछि वेकेंट तो वेकेंट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेटा यूज होला कोन पाई सेटा यूज होला टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ टर्मिनल कार्बोनिल एटम्स जो देखो स्ट्रक्चर देखो जो अनब्रिज्ड एफी एटम को चारिटा सीओ लागि छि समान टर्मिनल ग्रुप तो चारटा जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल थिला एफी रो सेटा यूज होला टू फॉर्म फोर मेटल कार्बोनिल बॉन्ड ओके देन आउ जो दीटा रही गला जो दीटा हाफ फील्ड अनहाइब्रिडाइज्ड D unhybridized orbital half filled hybridized orbital रही गला कार unbridged Fe atom रो से दीटा half filled hybrid orbital यूज होला कोन पाई बे यूज कोन पाई हबो टू फॉर्म मेटल बॉन्ड माने Fe1 टा Fe2 से गोटे बॉन्ड करिवो आउ Fe1 टा Fe3 से करिवो एकटा 200 गोटे बॉन्ड करिवो एक 300 करिवो तो से जो मेटल बॉन्ड केमिति हला केमिति कला जो अनब्रिज्ड एफी अछि अनब्रिज्ड एफी रे देखो अनब्रिज्ड एफी कोन होछि D2sp3 हाइब्रिडेशन होछि हेला पर तीनटा वेकेंट रहउछि आउ रहउछि तीनटा हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो तीनटा हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल लो दीटा यूज होछि टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ ब्रिजिंग सी तो दीटा जो हाफ फील्ड यूज हे गेला गोटे गोटे रहिला 2 नंबर एफी रे भी गोटे हाफ फील्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थिबो सेमिति 3 नंबर एफी रे भी गोटे हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल थिबो ओके तो 2 नंबर एफी रो हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल और 3 नंबर एफी रो हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप का सो करिवि हमर जो हाफ फील्ड जो दीटा एफी ना दीटा हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल जो अछंती Fe1 नो ताको से ओवरलैप करके से माने मेटल बॉन्ड करले और जो थर्ड मेटल बॉन्ड केमथि हला हमें जो देखिबे अन्य जो दीटा हे गेला मेटल बॉन्ड आउ जो थर्ड बॉन्ड केमथि हो देखो हम जो दीटा अछंती अनहाइब्रिडाइज्ड सॉरी दीटा जो ब्रिजिंग एफी अछंती जो दीटा एफी की ब्रिजिंग सीओ लागि छी से D2sp3 हेला परे तार गुटे एमिति गोटे ऑर्बिटल रहि जाई छी दी जण एफी रे जोटा कि अनहाइब्रिडाइज्ड एंड हाफ फील्ड भलो से देखो हाइब्रिडेशन ने देखो तो हाइब्रिडेशन देखिबो जो एफी दीटा ब्रिजिंग एफी अछंती से माने हाइब्रिडेशन परे तांकर गुटे ऑर्बिटल रहि जाई छी जोटा कि हाफ फील्ड एंड unhybridized
unhybridized half filled d orbital of second Fe will overlap unhybridized half filled d orbital of third Fe to form metal metal bond. तो दीटा हेतिला का सहित दीटा मेटल मेटल बॉन्ड हेतिला with Fe1 सहित 1 2 सो गोटे बॉन्ड 1 3 सो गोटे बॉन्ड और 2 3 भीतर बॉन्ड और 2 3 भीतर जो बॉन्ड हला दैट इज ड्यू टू overlap of unhybridized half filled d orbital of second Fe atom with unhybridized half filled d orbital of third Fe atom. तो बुझ परलो केम तीनटा बॉन्ड हला आउ कार कोन डाउट अछि पछारो आउ कार कोन डाउट अछि ओके आउ कार कोन डाउट अछि ठीक अछि तुम गोटे क्वेश्चन NiCO पर तुमने पढिछो NiCO पर पढि सालणी FeCO5 पढिछो Fe2CO9 पढिछो केते कार्बन से पढिछो हम क्वेश्चन होछि NiCO पर रे केतेटा कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग करन कहलो केतेटा कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग करंती NiCO पर बैक बॉन्डिंग होछि केतेटा कार्बोनिल होछि क्या आंसर दबो दियो आंसर दियो बोलो ठीक हो आंसर दियो चारटा कार्बन बैक बॉन्डिंग होछि NiCO पर आउ के को कहबो आंसर आउ कार आंसर को देखिबा the chapter ओके यस जितना कार्बोनिल थिबो सब केस रे बैक बॉन्डिंग करिवो किछि बहिरे हम काई पछाली सब हम ना कि ठीक अछि सब वही देखि माने किछि बहिरे थाए कोन दीटा CO को बैक बॉन्डिंग कर देथिबे तो सेंती करिवोनी कारण बैक बॉन्डिंग रे हमर होतले होउछि से देखना को CO से बैक बॉन्डिंग करिवो सब CO समान तो बैक बॉन्डिंग जेहेतु समस्त स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होछि बैक बॉन्डिंग समस्त पई होछि ओके तो तबे केबे भी किछि बहि अछि पर्टिकुलर केपी बहि लिखाइ थाए कोन कहलो दीटा CO बैक बॉन्डिंग होछि तीनटा CO बैक बॉन्डिंग होछि NiCO पर दीटा CO होछि आ दीटा CO होउनी एंती लिखिबन त माने के परीक्षा रे लिखडा ही भूल काहे ना NiCO पर जिते कार्बन अछि ऑल आर सेम कार्बन तो बैक बॉन्डिंग हेले समस्त बाय बैक बॉन्डिंग हो ओके सेति पई इन केस में NiCO4 जो कंपाउंड हो कि Fe3CO12 भी हो CO12 तो जो अछि सेति लिखिबो फ्रॉम IR spectral analysis we are getting the IR stretching frequency of terminal carbonyl is this जति तुम पाइबो बा लिखाइ दि खाता देखि नोट देखि लिखाइ छी which is lower than ना जोटा कि नॉर्मल वैल्यू टू कम ओके सपोज मो बतन पाई पाइले इन केस ऑफ Fe3CO12 मो 1980 पाइली कोन कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी टर्मिनल कार्बोनिल और कार्बोनिल हबा कथा केते कार्बोनिल हबा कथा 2143 2143 1980 जेति की हबा कथा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जे ताटो कमी जाउची लोअर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हे जाउची दैट मींस देयर इज सम बैक बॉन्डिंग so because hence there will be back bonding from filled d orbital of the metal with vacant pi star orbital of carbonyl as a result the stretching frequency of carbonyl is decreasing and it is lower than the actual value in case of bridging CO लिखियो bridging CO रे एतिक हबा कथा जनरली बट ए केस रे जेहेतु bridging CO पय कमी जाउची आहुरी कमी जाउची सो बैक बॉन्डिंग होउची तो एई लाइन ने एक्सप्लेन करिवो
हमें इतनी पाइबा कथा सपोज मु बर्तमान 2143 सेम इनवर्स पाइबा नॉर्मल सीओ पाई बट जो मेटाल सब बॉन्ड करूची बर्तमान Fe3CO2 केस रे मु पाउची अराउंड 1980 1980 सेंटीमीटर इनवर्स में पाउची दैट मीन मोर जते कि 150 पाखा पाखी मोर वैल्यू कमिला सेम इनवर्स स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कमुची इतनी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी काहे कमिला बिकॉज़ दे आर बी बैक बॉन्डिंग from filled d orbital of metal vacant pi star orbital of carbon, due to which the bond is the carbon oxygen bond becomes longer, and when the bond becomes longer, it will become weaker. The weaker है तो कम एनर्जी देले भांगी जीवो. That's why master sequence कमी जाउछ हैला से अनुसार बुझेबो से जिनस भी लिखि बैक बॉन्डिंग के से हाउची ब्रिजिंग सियोर भी से हाउची द एक्सटेंसिव बैक ओके तो समझते बुझ पाल बोधे तो नेक्स्ट आम जा फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एटा हम लिखि पठेबी आगे डिस्कस कर दबा तो फैक्टर्स तुम माने तो ट्रांसफर पढ़िथिलो तो गोटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऊपर कौन कौन फैक्टर माने टिके निजे आंसर दियो देन मु कुछ पॉइंट डिस्कस कर देबी कौन कौन फैक्टर्स हम तो और ट्रांसफर हम डिस्कस करिसंती तो तार बहुत गुडी फैक्टर यहाँ भी समान हम तो मैंने भाव गोटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्गेनिक रे पढ़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़छ इनऑर्गेनिक भी ट्रांसफर पढ़ सारलणी तो तुम मैंने जहाँ किसी आंसर मत दियो जे कोटा फैक्टर ऊपर हमर डिपेंड करिवो हम डिसाइड करबा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ता का ऊपर डिपेंड करिवो माने मत को देन मु डिस्कस करबी और हमें ये जो फैक्टर भी डिसाइड में हेल्पफुल हुए हमको डिसाइड करिवारे कोटा SN1 बा कोटा एसोसिएटिव हबो कोटा डिसोसिएटिव हबो वी कैन डिसाइड फ्रॉम द फैक्टर्स ए फैक्टर डिसाइड करि हबो व्हिच वन विल प्रोसीड फ्रॉम SN1 मैकेनिज्म व्हिच वन विल प्रोसीड फ्रॉम SN2 मैकेनिज्म SN1 माने कोन डिसोसिएटिव SN1 माने SN2 माने एसोसिएटिव कोटा हबो डिसोसिएटिव कोटा हबो एसोसिएटिव ओके फर्स्ट द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप करेक्ट देखिए आउगार कोन अछि फर्स्ट गोटे पॉइंट करेक्ट नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप हला गोटे आउ कोन हम सब को गोटे फैक्टर हला और बिनु चार पांचटा फैक्टर अछि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पर आउ कोन हम को माने सब इजी माने फर्स्ट माने जनरल हमर थिंकिंग होछ कोन नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप फर्स्ट तापरे nucleophile living solvent solvent effective right okay solvent effective gote rahbo then third inductive effect rahbo okay inductive effect rahbo yes inductive effect strength of ligand और ligand strength living group same type कारण living group जे भलो दैट मीन तार मेटल तार बॉन्डिंग कोन हबो वीक हो तो सेटा हम गोटे पॉइंट भाबी ऑल्दो किछि बहरे दीटा अलगा पॉइंट देछि तो स्टिल गोटे पॉइंट नेचर ऑफ जोडा लिविंग ग्रुप भलो लिविंग ग्रुप दैट मींस मेटल सता बॉन्ड कोन वीक जेतु मेटल सता बॉन्ड वीक दैट्स व्हाई से इजीली गोटे दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप मेटल से बॉन्ड वीक बोले से भलो लिविंग ओके सो तुम्हें कोई पारो से गोटे पॉइंट एंड देन इंडक्टिव इज सेकंड पॉइंट हैला सॉल्वेंट इफेक्ट हैला थर्ड पॉइंट आ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट गोटे पॉइंट हबोनी आ कोन को तीनटा पॉइंट हम पाइले नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड और स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड जहा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप वाला से गोटे सॉल्वेंट इफेक्ट गोटे पाइबो इंडक्टिव इफेक्ट पाइबो देन आ कोन अछि charge yes Diptimon correct charge on the complex metal oxygen state no metal complex ऊपर चला substrate और charge fourth point पाइ गेले charge आ कोन देखियो को चारटा पॉइंट हे गेला आ गुड पॉइंट हम कहि दियो आ गुटे पॉइंट हम केवल चारटा पॉइंट हम एठी पाइ गेले त माने सब कहि देला स्टेरिक इफेक्ट यस तो स्टेरिक इफेक्ट तो सब हम पॉइंट पाइ गेले तो गोटे डिस्कस करिया चारटा पांचटा पॉइंट त माने समस्त आंसर दे देला
तो सब फास्ट डिस्कस नेचर ऑफ लिविंग फास्ट डिस्कस करदबा मु तुमको पठेला आड़े जे पठेबी नोट्सटा पठेबी तो किसी एग्जांपल भी देदेवी तादरे देखिबो कार लिविंग रूम रेटटा किंतु अधिक आउची सिंपल जदि हम कहबा नै पारि और कॉम्प्लेक्स धर नैछि मु तो नेचर ऑफ लिविंग रूम मींस जो लिविंग रूम टा इजीली जाई पारथबो इजीली बाहरी पारथबो मेटल्स जा बॉन्ड टा वीक से इजीली लिव करि पारे मेटल कॉम्प्लेक्स को इजीली बाहर जाई परिबो जोटा मेटल कॉम्प्लेक्स को इजीली बाहरी पारिबो बा सेही भलिया लिगैंड थिले रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर हो तो से केस रे अगर सपोज गोटे कॉम्प्लेक्स नैछि मु CONH3 होल 5 Cl नैछि आ गोटे CONH3 होल 5 I नैछि आयोडीन अछि गोटे जार अछि क्लोराइड गोटे जार अछि आयोडाइड तो आम देखा जो आयोडाइड थी से केस रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हम बिकज आयोडीन साइज बड़ तो निश्चित बॉन्डटा वीकर हम देन क्लोराइड ठार इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप एंड आज आयोडीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप आयोडाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप से आम देखा रेट ऑफ रिएक्शन अधिक हम नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप देन आसो आउ डिस्कस करिया चार्ज चार्ज गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट चार्ज इफेक्ट कौन मत किए कहबा देखिए ये मत बुझी पारिबो चार्ज रो इफेक्ट कौन रहबो तो चार्ज आम अलरेडी कहते काली माने कॉम्प्लेक्स ऊपर देखो जिते कॉम्प्लेक्स ऊपर भी अधिक थर गोटे कॉम्प्लेक्स +1 चार्ज अच्छी गोटे कॉम्प्लेक्स ऊपर 2 प्लस चार्ज जो गोटे गोटे एग्जांपल नियो गोटे अच्छे CA इथिलीन डायमीन होल टू Cl2 ऊपर सिंगल प्लस कॉम्प्लेक्स ऊपर सिंगल प्लस ओके पूरा कॉम्प्लेक्स सिंगल प्लस आउर अच्छे CO से कोबाल्ट En होल टू Cl वाटर ऊपर 2 प्लस अच्छी तो गोटे कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज 2 प्लस अच्छी गोटे कॉम्प्लेक्स ऊपर अच्छी प्लस केवल कॉम्प्लेक्स ऊपर तो देखिबा जो कॉम्प्लेक्स ऊपर 2 प्लस बा जो सबस्ट्रेट रो 2 प्लस चार्ज सेठी रेट ऑफ रिएक्शन टा स्लो होबो बहुत कम होबो माने 100 टाइम्स स्लो होबो ध्यान जहां पर सिंगल प्लस तो जहां पर जो कॉम्प्लेक्स ऊपर भी चार्ज कम थिबो से फास्टर रिएक्शन करिवो देन द कॉम्प्लेक्स हैविंग हायर चार्ज अधिका चार्ज ले रिएक्शन स्लो होबो ओके देन आउ व्हाट इंपोर्टेंट पॉइंट होची स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक इफेक्ट मते सपोज गोटे कॉम्प्लेक्स अछि बहुत क्राउडेड ओके धर गोटे कॉम्प्लेक्स में नेली CO En ऑफ 4 आउ गोटे अछि तापरे NH3 तापरे Cl अछि ओके आउ गोटे कॉम्प्लेक्स अछि CO NH3 होल 5 Cl हला गोटे कहूछ आउ थरे सुना CO En होल 2 वाटर Cl चार्ज होची 2 प्लस आ गोटे सेमती CO NH3 होल 5 Cl ऊपर 2 प्लस तो डिफरेंस सेम इट इज बोथ जगह 2 प्लस अछि कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कोबाल्टा बहुत जगह 3 प्लस स्टेट रो अछि गोटे जगह अमोनियम रो 5 टा अछि आवर जगह मोर 4 टा अछि कोन इथिलीन डायमीन 4 टा 2 टा अछि आ गोटे अमोनियम गोटे बाइडेंट लिगैंड अछि गोटे बाइडेंटेड लिगैंड अछि तो मोर क्वेश्चन होची फास्ट कोठी रिएक्शन टा स्लोयर हबो आउ तापर हम जो दीटा हम सबस्ट्रेट देली तापर कोटा SN1 हबो कोटा SN2 हबो ओके आउ थरे क्वेश्चन होला CONH3 होल 5 Cl ऊपर 2 प्लस 1 कॉम्प्लेक्स आ होटल CO कोबाल्ट En होल 2 अमोनिया तापर अछि Cl ऊपर 2 प्लस तो क्वेश्चन होची कोठी रेट ऑफ रिएक्शन अधिका हबो कि स्लो हबो जा कुछ हो एंड को कॉम्प्लेक्स टा SN1 हबो को कॉम्प्लेक्स टा SN2 हबो मते सेटा आंसर दियो कोटा SN1 हबो कोटा SN2 हबो की आंसर दो को कॉम्प्लेक्स टा रेट टा स्लो हबो कोटा फास्टर हबो कोटा SN1 हबो
କିଛି କହିବନି କୋଉଟା ଷ୍ଟେबଲ ହବ ମାନେ କୋଉଟା ସ୍ଲୋ ହବ କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ହବ କହିବାକୁ ଗଲେ जो कॉम्प्लेक्स खाली अमोनिया लगी चिरेट लिगांड नहीं सेटा निश्चित फास्टर रिएक्शन हो CuNH3 Cl जो अच्छी सेटा फास्टर रिएक्शन हो ओके तापरे मु चूज करबी कारण क्राउडिंग कॉम्प्लेक्स अच्छी स्टेरिक हिंड्रांस अच्छी तो जाले रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो ओके जो स्टेरिक हिंड्रांस रहइबो रेट ऑफ रिएक्शन कमी जिवो CuNH3 स्लो यस CuN2Cl टा होची NH3 गोटे Cl देले भी स्लो सेटा हो क्वेश्चन होची अंक को SN1 कोटा फॉलो करबे SN2 कोटा फॉलो करबे व्हिच वन विल फॉलो SN1 व्हिच वन विल फॉलो SN2 SN1 कोटा फॉलो करबे SN देखो हमें पढ़े अपन मेकानिज्म SN1 कोन होची SN1 ने गोटे लिगांड पळौची गोटे in SN1 in SN2 or in your associative mechanism गोटे लिगांड आसुची गोटे 7 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होची SN1 ने होची 5 मेंबर SN2 रे होची 7 मेंबर गोटा हमर स्टेरिक हिंड्रांस जो कॉम्प्लेक्स रे बेसी अछि ऑलरेडी से बेसी क्राउडेड पूरा क्राउडेड अछि ताकू जदि मु पुणी आ गोटे देबी यानी कि लिगांड पुणी से आउर ओवर क्राउडेड हे जिवो तो सेति पय स्टेरिक हिंड्रांस जो कॉम्प्लेक्स रो अधिका थिबो से प्रिफर करे कोन जने कि बाहरी पड़ो CuNH3 5 पे SN1 नहीं हो उल्टा कहलो देखो तुम मैंने गोटे सीट रे 10 जण बसछ जागा हो तुम जाउ तो कोन जने कि बाहरी पड़ो ठेला पेला होछ ठेला पेला होतबो जने कि बाहरी पड़ो जने कि बाहरी पड़ेले तमे कोन कंफर्टेबल बसिबो कि नहीं तो लाइक दैट तो ठीक था सी भी चाहे गोटे के बाहर की जाऊ भल से सब प्रिफर कर टू फॉल टू फॉलो डिसोसिएटिव पाथवे जो गोटे गोटे 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट दबो 5 मेंबर ट्रांजिशन देले मोर स्टेबल स्टेट से जोड़ा स्टेरिक हिंड्रांस जो कॉम्प्लेक्स अधिका से माने फॉलो करिवे SN1 जो तुम CuNH3 Cl कहलो सी SN2 फॉलो करिवो एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करिवो काहेकि ना लेस क्राउडेड तो से इजीली करि पारिबो सो 7 नंबर स्टेट दा किसी प्रॉब्लम नाही हम भी हम जो हम आंसर कहले कोन आंसर कहले जे एटा फास्ट रहबो कोटा CuNH3 होल 5 Cl टा फास्ट रहबो देन CuN2Cl थारु हम ऑलरेडी जानि जदि SN2 रिएक्शन इज फास्टर SN1 थारु जेतु SN1 दीटा स्टेप रे होची SN2 फास्टर लाइक दैट आम पाई भी कोन होबो एटी SN2 टा ही फास्टर रहबो CuNH3 होल 5 Cl फास्टर रहबो देन CuEn होल 2 Cl जो ओवर क्राउडिंग हे होची तो फास्टर कोटा सेटा फास्टर होतला हम भी जानि जदि SN2 फास्टर ओके देन असला सॉल्वेंट भी तुम डिपेंड करे इनडायरेक्टली का हाबर कहलो स्टेरिक क्राउडिंग ऊपर सॉल्वेंट डिपेंड ओके जिते स्टेरिक हिंड्रांस भी बढ़ी जीवो सॉल्वेंट कोरिलेशन ता करिया कोन होबो सॉल्वेंट कोरिलेशन के डिफिकल्ट होबो आ गोटे कहि पार जो सॉल्वेंट माने कोऑर्डिनेट करि पारथो लाइक वाटर हो तो से माने रेट ऊपर अफेक्ट करिवे और अन्य माने अफेक्ट करिवे नाही जो सॉल्वेंट को किछि माने कोऑर्डिनेट करि परिबोनी तार लोन पेयर नथिबो से केमती आ अफेक्ट करिवो रेट केमती एनहांस करिवो कि डिक्रीज करिवो तो ओनली तो सॉल्वेंट कैपेबिलिटी जार थिबो टू डोनेट पेयर इलेक्ट्रॉन लाइक वाटर हो कि लिक्विड अमोनिया हो से माने अफेक्ट कर परिबे एंड फाइनली इज इंडक्टिव इफेक्ट तो इंडक्टिव इफेक्ट कहार कहलो इंडक्टिव इफेक्ट होची जे जीव तार हो जोरा लिविंग रो तार देखा हो जो माने रहउछन बा जो माने बाहर के जिबेनी तांकर देखाबो इंडक्टिव इफेक्ट जदी जो माने रहिबे जो ग्रुप रहिबो तार इंडक्टिव इफेक्ट अधिक हैला ताले से को करिवो से तो स्टेबलाइज कर परबे हमें देखा हमें जो कोहंती टर्शियरी कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल काहे हाईली स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप रो प्लस आई इफेक्ट बाई टर्शियरी कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल हमें या कोहंती तो सेम थिंग अप्लाई कर ये केस सेम अप्लाई कर तो जते बेले जो ग्रुप माने रहउचंती माने जाउ नाहंती जदी से मानकर इंडक्टिव इफेक्ट अधिका हैला ताले से माने SN1 और डिसोसिएटिव पाथवे फॉलो करिवे जदी इंडक्टिव इफेक्ट कम हैला से माने फॉलो करिवे एसोसिएटिव पाथवे तो जो मन रहउचंती बारंबार जोटा लिविंग ग्रुप जाउ जे तार देखावनी
जो माने रोहुचंती बा जो माने लिव करे जाउना छाड़ी जाउना से मानकर देखा इंडक्टिव इफेक्ट जदि से मानकर इंडक्टिव इफेक्ट अधिक हेइथिबो दैट दे विल फॉलो SN1 pathway दैट मींस योर डिसोसिएटिव पाथवे ओके नहले SN2 pathway एथिक हैला फैक्टर्स आउ स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक्चुअली स्टेबिलिटी कांस्टेंट समस्त ऊपर डिपेंड करे तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स रो स्टेबिलिटी कांस्टेंट अधिका तो मोर स्टेबल तो मोर स्टेबल हैला माने रेट ऑफ रिएक्शन कोन हो स्लो हो ओके तो तुम माने एतिकी जिंस फैक्टर डिस्कस कर देला हमें तो एटा लिखि पठे देबी परे पर आज तुम मास पठेबी मास तो माने लिखो आ देखो पढ़ा पढ़ी करथो मास सरला परे जो माने पीजी पे इंटरेस्टेड अछो चैप्टर वाइज पढ़िबो पढ़ साला परे मते को डाउट हो कहबो से अनुसार हम ऑनलाइन ने बुझे देबी जो चैप्टर डाउट हो तो आज मैं एतिकी काली मास नोट लिखिबो काली हम स्टार्ट मास डिस्कस कर दो मास स्टार्ट कर दो हम टिके मास स्पेक्ट्रा में कौन करबा मास स्पेक्ट्रा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माने पूरा प्योर ऑर्गेनिक मैकेनिज्म जेमि तमे पढ़ो मास स्पेक्ट्रा सबुटु फंडामेंटल जिंस होची को कार्बोकेटायन अधिका स्टेबल को कार्बोकेटायन अधिका स्टेबल एतिकी मन रखिबो तमाने पर आज पारिबटी देखि दबो को कार्बोकेटायन ता अधिका स्टेबल कार्बन ऊपर प्लस केमिति स्टेबल हो सेतिकी जे बुझी पारथिबो से मास स्पेक्ट्रा बुझिले ओके तो मास स्पेक्ट्रा हम को करू गोटे कंपाउंड नो हला गोटे कंपाउंड हम नबा कंपाउंड नै कि ताको हाई मूविंग बा हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट करिबा इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट करि कि से कंपाउंड को भांगी दबा फ्रैगमेंट करिबा हला कंपाउंड जो भांगीबा से डिफरेंट आयन दबो ओके तो डिफरेंट आयन दबो ताको हम से मास स्पेक्ट्रा जे थिबो एनालाइज से ताको एनालाइज करबो एटा अछि जो इंस्ट्रूमेंट पढिबा इंस्ट्रूमेंटेशन कलेक्टर अछि तार एनालाइजर अछि सोर्स अछि बहुत निस अछि पढिबा सिंपली कथा कहिले गोटे मास स्पेक्ट्रा रो जो बेसिक प्रिंसिपल होछि ऑर्गेनिक कंपाउंड ने हाफ ताको हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट करिबा बॉम्बार्डमेंट परे से मॉलिक्यूल ता कोन फ्रैगमेंट हबो फ्रैगमेंट हे कोन दबो न्यूट्रल मॉलिक्यूल दबो फ्री रेडिकल दबो ता सहित कैटायन दबो किंतु जो इंस्ट्रूमेंट हमर थिबो मास स्पेक्ट्रा जो इंस्ट्रूमेंट थिबो मास स्पेक्ट्रा इंस्ट्रूमेंट केवल कैटायन को डिटेक्ट करिवो हला केवल आयन को डिटेक्ट करिवो माइनस बाहरिवो सेठी केवल प्लस जो बाहरिवो केवल से आयन को जेहेतु आयन को डिटेक्ट करिवो रेडी हेबे ना तो को आयन डिटेक्ट हो जो माने स्टेबल टिके होतबे आ तापर मास स्पेक्ट्रा आउट क्वेश्चन आसे ए को मास स्पेक्ट्रा माने को किटा अधिका स्टेबल अनस्टेबल बा कोटा अधिका इंटेंस तो सिंपल मन रखता हो एरा मन रखता और डिस्कशन हला बा जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जोटा सबुटो अधिक स्टेबल हो से सबुटो अधिक इंटेंस एटा सिंपल थ्योरी जे सबुटो अधिक स्टेबल हो जति आयन बाहर तार हम जो भांगीबा तो भांगी सो आयन बाहर करिबा जो तर 100 टा आयन बाहरला तो जो आयन टा अधिक स्टेबल हो से सबुटो इंटेंस हो प्रिंसिपल हला कोन ऑर्गेनिक कंपाउंड नपा हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट कला पर से भांगीबो भांगी के डिफरेंट आयन दबो आयन मानु को हमें मास स्पेक्ट्रा रे कलेक्ट करके एनालिसिस करबा दिस इज द प्रिंसिपल ओके तो एथि मास स्पेक्ट्रा स्टार्ट तो कर देले काले हम मास स्पेक्ट्रा डिस्कस करबा हम पठे दे बर्तन बेसिक थ्योरी तो मन लिखि दबो कम से कम बेसिक प्रिंसिपल लिख दबो थ्योरी मु पठेबी बेसिक प्रिंसिपल थ्योरी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आज एथि की निश्चित कवर कर दबो अन्य गुडा को धीरे लिखिबो सब किन पठे देबी ओके थैंक यू